यहाँ एक कुर्सी पे है मैं, तू भी बाजू में हो तो बैठना। Yes, sir. Okay. Good evening, everyone. Indian Nurserymen Association organized webinar series for future webinar series में मैं सचिन ब्राह्मणकर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो वेबिनार होने जा रहा है दैट इज द 69th वेबिनार। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन द कल्टीवेशन ऑफ ग्लैडियोलस एंड एंथुरियम। दोनों प्लांट जो है कट फ्लावर में बहुत अच्छे से यूज होते हैं और अभी एंथुरियम भी पॉटेड प्लांट्स में अच्छे से यूज होने लग गया है। तो उसमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर मुकेश पटेल जुड़े हुए फ्रॉम एसपी कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नवसारी। दूसरे जो स्पीकर हमारे साथ जुड़े डॉक्टर हार्दिक शाह फ्रॉम एसपी कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन की ओर से मैं दोनों स्पीकर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं जो आज हमें यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मार्गदर्शन करने वाले हैं। उसी के साथ साथ हमारे साथ आज जो भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं तभी सभी पार्टिसिपेंट्स का इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन की ओर से स्वागत। ये जो आज का 69th वेबिनार है ये कंटिन्यूस सीरीज जो हमारी चल रही है उसका एक लेखा जोखा जो भी वाईपी सिंह साहब के मार्गदर्शन में हम एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं और जो भी एक्टिविटी चल रही है इसका संक्षिप्त स्वरूप में प्रेजेंटेशन करने के लिए मैं हमारी प्राची मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी इंडियन नर्सरीमैन के एसोसिएशन की एक्टिविटीज है आप सबके सामने संक्षिप्त में रखे। तो ओवर टू यू प्राची मैडम। Thank you, sir. A very good evening, ladies and gentlemen. I hope I'm audible to everyone. Yeah, you're audible. Please go ahead. Yes. I'm Prachi Kohli and I would like to share with you all a very short introduction about what INA is and what INA does. The Indian Nurseryman began its green journey in 1987, and for the last 33 years, we have been proudly calling ourselves as a tight-knit community working towards a greener India. Our vision is to unite the horticulture community and work towards our goal of making a positive economic, cultural, and social impact. Our founder and first president, late Shri Arjun Das Agarwalji, was the one who sowed the seeds of INA as we see it today. At INA, we are forever indebted to this visionary man for his untiring efforts. This is our leadership board who have taken Shri Arjun Das Agarwalji's agendas to new heights. Our current president, Mr. YP Singh Ji, who was also the 9th INA president, took charge in 2019, and under a short span of his leadership, we have proudly announced that INA is now not only growing incredibly nationally, but also globally. The current leadership board is evident of the fact that INA leaders hail from all over the country, representing unity and diversity of India. Furthermore, we have our iconic green ambassadors from various industries supporting INA in its endeavors. INA is today the largest NGO as a member of the National Horticulture Board with an extended network of more than 2 lakh farmers and cultivators. Therefore, INA represents plant breeders, greenhouse gases, distributors, retailers, educators, florists, researchers, landscapers, and all other stakeholders across the spectrum in the horticulture industry. INA works in a diverse range of thematic areas from PR and advocacy to publications and partnerships, from networking to events, exhibitions, fundraising, capacity building, and even study tours. INA worked extensively during the COVID-19 pandemic with the government ministries through video conferencing and put forward the problems faced by the nursery sector during the lockdown. INA was successful in categorizing plants and plant products under the essential items category and providing immediate relief to nurserymen across India. A great news for all our members and subscribers is that INA is now global. I am proud to inform you all that INA family has now expanded to Japan, Vietnam, Lebanon, South Africa, Netherlands, Italy, Colombia, amongst others. Our star feature at INA is our Nursery Today magazine, which covers all news and updates related to the nursery and allied sectors and features works of industry experts and influencers.
You can now download a soft copy of our monthly magazine from the INA website. Apart from this monthly edition, INA also publishes a directory for horticulture industry every 3 years, and its third edition is due this year. INA hosts India's largest international exhibition on ornamental plants, nurseries, landscape, floriculture, greenhouse, arboriculture, and allied industries called the HortiPro India. INA, in association with the Delhi Tourism and Transportation Development Corporation Limited, organized the 33rd Garden Tourism Festival held in March 2021 at the Garden of Five Senses, New Delhi. The theme for this year was Green Balcony, and INA was an associate partner and what sponsored this event. Last but not the least of INA's endeavors, we also started an initiative called Project Sampradhan, encouraging its wide network of members to contribute towards the PM Care funds in lieu of the global pandemic. We have broken records in this department where we have collected more than 51 lakh rupees and donated towards the PM Care funds. With these amazing success stories, I thank you all for your patience. You can now contact us on the given phone numbers and emails for any query or discussion, or visit our website for more details. I hope you have a wonderful time today with our speakers. Thank you. Over to you, Sachin sir. Thank you, Prachi madam. आज का जो हमारा is on cultivation of Gladiolus and Anthurium. आज सभी आप लोग जानते हैं कि ग्लैडुलस और एंथुरियम का दिन ब दिन डिमांड मार्केट में बढ़ते जा रहा है. एज ए कट फ्लावर ग्लैडुलस का और एंथुरियम का डिमांड बहुत बढ़िया हो रहा है, और उसी में मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर मुकेश पटेल जुड़े हुए. He is an assistant professor from ASPEE College of Horticulture and Forestry, Navsari Agricultural Navsari. He has a wide experience in the field of floriculture and landscaping. Especially, he has worked on the turf grass management, cut flowers. He has designed and developed so many gardens, especially rooftop and bio walls. He is a coordinator of one and only turf management courses in the country. He is a budding scientist award holder for PhD research. For his PhD research, he is also guiding the MS, PG, and UG students. So today we have with a very knowledgeable personality with us, Mr. Mukesh Patel sir. So I welcome him on behalf of Indian Nursery Association, and I request him to guide us on the cultivation of Gladiolus. So today he is going to guide us on the Gladiolus cultivation. So I once again request Dr. Mukesh Patel sir to guide us. So over to you, Mukesh sir. Okay, thank you, Sachin, and thank you, INA, for giving me a wonderful opportunity again. So, am I audible? Yeah, you are audible. Okay, my screen is it visible? Yeah, it's visible. Please go ahead. Okay, so friends, I welcome you all on this 69th edition of INA webinar. Dr. Mukesh, just I will सभी participants से request, please unmute yourself. Please keep yourself on mute. It's my humble request to all the participants to be on the mute. Sorry, sir. Please go ahead. Okay. So today, friends, the topic that I have been given, that is scientific cultivation of Gladiolus. So Gladiolus, the name that is the gladius is given by a Roman, that means sword, because it is having a sword-like leaves. It is one of our most important cut flower, particularly a bulbous cut flower, because it is grown by the corms, which is an underground part, and it is a very beautiful cut flower crop, giving very immense different colors, and also the petals of individual florets are also different. Petals are bold, filled margins. So many different colors are available in the market. So it is very popular among the particularly the florists who arrange the flowers, and it is this particular crop is grown during the winter season,
in many part of the world, and also in India it is cultivated on a larger scale, and slowly this particular crop is getting popularity among the growers. So let's start with the introduction. That is, botanically it is known as a Gladiolus grandiflorus. That is its scientific name. As I have told, it's derived from the gladius, meaning that is a Latin word that means a sword, because it is having a sword-like of leaves. It comprises of 250 different species. Among them, this Gladiolus grandiflorus is a cultivated species. Its family is Iridaceae, and the central of the origin, its origin is especially Central Europe, the Mediterranean region, tropical and South Africa, where you can find the wider diversity of this particular crop. It is a cross as well as self-pollinated crop, and it is a long day plant, so it required a daily day length that is more than a critical day length, that is around uh, 8 to 9 hours. This particular crop, regarding its importance and use, this particular crop is grown as a cut flower crop, and it is very popular in the international market also. So it is having good export value also. It is also very popular among the gardeners as a bedding plant in the garden. So they looks very beautiful. The spike comes out in a great profusion, and they come out at time and looks a very good bedding plant. So the flowers sometimes they are grown in the pot also, and when they come to bloom, the pots are brought in inside, so they are also as in indoor decorations. So they are also popular in making bouquets and indoor decorations. uh, why? Because the keeping quality of this particular cut flower is good, so you can keep it the flower under the its whole influence under the vase in your home condition for 1 to 3 weeks. So the flowers, particularly the opening pattern of the flowers, is from bottom to the top. So first the bottom flower will open, and slowly the it goes upward and giving you a very good look. Uh, it is a herbaceous plant, and it is grown by the underground storage stem, particularly in the lower picture you can see. If you plant a single corm, there are three different corms, and if you grow for a corm, then it will use particularly to the corm food material will be used for vegetative growth, and after flower emergence, the corm will particularly the plant will start to store its food under the underground rhizomatous structures, that is called as a corm. So you will get three corms. Between those corms, you will find a small cormels, which are also used as a producing of the corms for the after three successive season growing. मीन्स आप छोटे छोटे कॉर्मेल्स लगाते हैं, तो 3 सीजन तक आप लगाते हैं तो भी आपको उसमें से बाद में साइजेबल साइज प्लांटेबल साइज की कॉर्म्स मिलती है। ऊपर के पिक्चर में हम देख सकते हैं कि दी स्वॉर्ड लाइक लीव्स come out from the base, that is radical leaves come out from the base. इस तरह से एक कॉर्म के अंदर 3 बर्ड्स होती हैं, तो 2 से 3 बर्ड्स होती है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कॉर्म, एंड there will be 2 shoots or 3 shoots depending on the size of the form. 2 से 3 shoots निकलते हैं या 2-3 flower आपको मिलते हैं depending on the size of the combs, and the size of the combs more the size of the combs, you will get the larger number of inflorescence. In the world, it is grown in Holland, very uh, large cultivation, Germany and United States of America. There is a society, United States, USA, Gladiolus Society, that you will find in India. West Bengal having the very large patch, followed by
Himachal Pradesh, Sikkim, Karnataka, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Punjab, Delhi, Tripura, and so many parts of the world. Also Maharashtra as well as Gujarat. In Gujarat also slowly this crop is growing popularity because we have introduced this crop as our university have introduced this crop 8 to 10 years, and slowly it is getting popularity among the farmers. It's a seasonal cut flower crop, so it is not a perennial crop. So you need to grow this particular crop, plant these crops, particularly in this season or particularly in this month from October to November. It's the best time for planting. In India, around it is 1270 hectares of land, and with the 1/6 crores cut flowers production, and uh, particularly for export, the length of the spike, that is the whole inflorescence, should be 80 to 90 centimeter. So that will be a requirement for the export. Some of the important variety Gladiolus species are there. Many species are there. Anthurium, communis, cardinalis, floribundis. These are the wild species. But the Gladiolus grandiflorus, that is the all modern day cultivars, are designated in it. These are the some of the picture of wild varieties, that is Candavensis. This is the communis, then Pimulinis, Atraviolesius, Cardinalis, Floribundus. These are the wild species. Now coming to the switching to the varieties, there are many varieties developed by foreign breeders. Many exotic varieties are there. In international market, particularly the exotic varieties are very popular. But in India, the private public institutes like IARI New Delhi, IIHR Bangalore, NDRI Lucknow, PAU Ludhiana, these and many institutes are doing the hybridization work, and they have produced many varieties of the Gladiolus. These are the varieties on the basis of colors, particularly in thick Miss America, Windsor, Aplos, Dawn Pink, Desico, and many. Offensive is a very popular, one of the popular American beauties, popular variety. And these are the name of different varieties on the basis of these are the varieties developed by our public sector institutes like IARI New Delhi, like they develop Pusha Sinduri, Pusha Red Valentine, Pusha Shubham, Pusha Kiran. Then BHU Varanasi, IIHR Bangalore have remarkable work and produce many varieties like Arka Amar, Arka Nabi, Arka Gold. You will get the planting material from these institutes by contacting them, IARI New Delhi, IIHR Bangalore, and BRI Lucknow. Even our Navsari Agriculture University and our Department of Floriculture and Landscape Architecture. Also, we give plantable size palms to the sell to the farmers. Uh, these are the top 10 cultivars Gladiolus in the international market. So fancy, hunting song, Muscadine, Novalux, Peter Pierce, Priscilla, Stickens, Tedderhorn, White Prosperity, White Fence. See, these are the uh, uh, varieties which is having international demand. These are some of the varieties we have collected. Eurovision, Green Star. Then you can see a lot of colors are available. Not a single color. There are bicolor, some streak mark, some tinge marking. So this variety is wine and rose. Sansari is a very popular variety with white colored florets. American Beauty, Fidelio, again very beautiful variety. Her Majesty, that is police type of Priscilla, very beautiful variety. Novalux, Peter Pierce. These are some of the varieties that we have collection at our farm. Sarjada, Gunjan. And these are the exotic varieties, some of the exotic varieties that in which you can see the pattern of the florets, like some of the wavy florets, you can see bold florets, then fringe margin florets. And this is the general view of the field at our farm. Here you can also see
the plantings and the blooming. Now regarding its climate, so it prefers particularly a mild climate and also a long duration of sunlight. So it is a sun-loving, we can say it's a sun-loving plant. So we should place this particular crop in full sun. Either in your garden, you should place them in full area which we receive the full sun. So its optimum temperature requirement is 18 to 25 degree, and night temperature is not above 16 degree, while if the temperature rise above 30 degree centigrade, so slowly it affect the flowering, and when it goes up above 40 degree centigrade, so where there is a lack of humidity, then maybe the flowering may arrest. But if the humidity is good, then this crop will perform, that it will compensate the heat. And if the temperature goes below 7 degree, then also the growth will be retarded. So it prefers a mild climate, we can say, uh, and 8 hours of sunlight. So it also requires for storage of corms, because after harvesting of the flower, just like onion, the watering is stopped and the corms are harvested, and so the harvested corms are cured like an onion, and they are stored in the cold storage, or you can store at home condition in the small earthen pot and covered with black sand. So that calm storage temperature is requirement is 3 to 7 degree centigrade. You store it under cold storage. Now the propagation, it is propagated by corms and cormels. So there in this picture you can see the uh, uh, in the second picture you can see the lower portion is the mother corm. So that food material will use to for vegetative growth. Then it will produce a new corm, daughter corm, that is also called. In some of the varieties, they produce three, depending on the types of variety also. Then between those junction of corms or root around the root zone, you will root area, periphery of the root area, you will find a small cormels. So it produce many cormels in the small pictures that you can, in the lower picture you can see many cormels, and they produce around 10 to 50 cormels, and depending on the type of variety. So some of the varieties are uh, very fast in producing many cormels. So you will get also those cormels. These cormels will not give you the flower next year, but if you will plant them next year, then they will produce a small cormel. Again, you will plant those small corms. Again, you will plant in second season. Then you will go get a plantable size corm. So it requires 3 seasons, or we can say 3 years, to produce a plantable size corms from the cormet. And also you will get 2 or 3 corms also. In the first picture you can see from the single corm you planted, you will get maybe get 3 corms also. Here also the size of the corms, particularly for planting, size of the corms is uh, very important. Size of the corms is very important. The more the size of the corms, you will get the larger number of flowers. So it is positively correlated. We can say the size of the flower or number of florets is positively correlated with the size of the corm. So you plant more large number of larger this corm size, you will get the larger number more size of the inflorescence. So generally 4 to 5 centimeter diameter is a plantable size form. At least you should plant a diameter forms having a diameter of 4 to 5 centimeter diameter. But some of the corms are about 6 centimeter or more than 8 centimeter. So that they will produce very large spike, very huge spike that will be for the exhibition purpose. So
that is also a very that will produce very excellent flowering. So and if the colms or colmens having the diameter of 5 centimeter or less, then they are produced for the next development of colms for the future. Soil. Now, this particular crop generally require a well-drained loamy soil that is rich, fertile, and rich in organic matter. In heavy clay soil with poor drainage, this is found unfit for the root system. But if you want to grow in such type of soil, you should add the organic matter. Then you can add a thick layer of river sand. You can add to make these porous. Here in our South Gujarat, we have a heavy black soil, you can see, but that's why we produce it. We grow it on the raised beds, the beds which are raised, and ample quantity of organic matter we add. Particularly, we add the sugarcane paste mud one season before, so that makes it very friable structure of the soil that will be very useful for its form development. So the lighter the soil, you will get a larger the size of the forms you will get. So that is very important. So you can grow this particular crop in the raised beds or ridge and furrow method. You can grow. The pH range should be 6 to 7. Highly acidic or alkaline soil should be avoided, because in highly acidic soil, that is unfit also, and alkaline soil, there are many problems, like that soil will hold the moisture for longer time, so that is not desirable for the proper crop growth. Now, planting time: October to March in plains, particularly if you are living in we can say a temperate type region. In hills, June to September, but in the rest of the area, best time for planting is mid-September to mid-October. So in this part, in our part, this is the best time, that is September to October is the best time. You can grow up to November, but that is not desirable in our part. If the winter is a long winter, having a very good long spell up to March, April, then you can go for November. Otherwise, you should manage the planting between September to October, mid-September to mid-October, and the planting should be done in the staggered form. Not all the forms should be planted in batches. So you will get a steady supply of the flowers, not at a time. Suppose you are going to plant for the 1 hectare, so you should divide the whole field in four or five parts, and in different parts you should plant at the interval of 2 week or 1 week or 2 week, depending on the occasions, on the basis of the requirement of the market. Now, method of planting. So it should be planted 8 to 15 centimeter deep, depending on the soil condition. If the soil is heavy black, then their ponds are planted at um, the very shallow distance, or we can say 8 centimeter. Or if the soil is very light, so they are planted at the 15 centimeters. And because in heavy soil, if you plant it very deeper, then there will be a problem of germination, and depending on the size of the ponds, also the depth should be monitored in such a way. The planting distance should be 30 by 20 or 30 by 30. Here we at our Gujarat, we suggest the 30 by 30 centimeter. It's a good size, and you will get 15 plants per square meter, or 1,50,000 hectares is ideal for quality production. And the price of the corn will be from 3 rupees to 5 rupees, or 7 rupees. So the cost of the planting material is more generally, but by selling the corms also you will get additional income. Not only by selling the flowers, you can get additional income by selling the corms. Then you will get a lot of cormels, which you again plant for the next season. Then
from them also you will get comms and comments. So that will be a very good added advantage, and that the payback period is little bit more, but you will get a very good return. So to break the dormancy, you can give the treatment of thiourea at 1000 ppm, that is 1 gram per 1 liter at the rate of, or GA3 at 100 to 100 gram, 100 to 120 ppm before planting to break the dormancy. This particular corms have a scaly leaf structure that is known as a tunics or husk. उसके ऊपर एक हस्क या टूनिक्स जैसा एक लीफी कवर होता है, तो उसे थोड़ा निकाल के फिर उसे प्लांटिंग किया जाता है जिससे कि जर्मिनेशन अच्छा हो. यू कैन गिव treatment of GA also 100 to 250 ppm, मतलब 100 milligram per 1 liter of water or 250 milligram per 1 liter of water you can give. Now, interculture operation. There are some interculture operations like weeding, then earthing up, staking, giving the support. These are some of the weeding. Some of the interculture operations are very vital because most of the floriculture crops are herbaceous annuals or herbaceous perennials. So at the initial stage of growth, the weed should be removed. शुरुआत में अगर आपने weeding नहीं किया तो your crop may fail. So that's why the initial weeding is to keeping the field clean is very important. So by hand weeding, or you can go for hoeing, particularly the earlier after 20 days, you can go for the hoeing. हो से आप interculture operation कर सकते हैं. So first weeding should be completed within the 3 weeks, and the second one is before the fertilizer application. And you can go for the pre-emergence weedicide also if you're large scale production. So you will go for the pendimethalin 30 EC, that is 0.75 kga per hectare, active ingredient per hectare. So that is a 5 ml at the rate of 5 ml per liter. So at the rate of 5 ml per liter, you can spray. The spraying should be after the planting, means planting करने के बाद उसे इरिगेट करने के बाद, आज शाम तक आपने इरिगेट कर दिया तो अर्ली मॉर्निंग में आप उसे पेंडिमिथालिन का स्प्रे कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो वीड के सीड्स है उसे वो ग्रो करने से वो ये पेंडिमिथालिन है उसे सप्रेस कर देगी और वो ग्रो नहीं हो पाएंगे एटलीस्ट फॉर दी 35 to 40 days. So that will keep up your field clean, and the particularly the corms are planted deeper, so this particular pendimethalin will not affect the crop. So आप 8 सेंटीमीटर नीचे लगाया है आपने तो there is no problem. 5 से 8 सेंटीमीटर 6-8 सेंटीमीटर लगाया है नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Then you can irrigate, and after irrigation immediately you can spray the pendimethalin, but not after emergence of the crop. मतलब क्रॉप जब नीचे ग्रो किया है उसे उसमें पानी दिया, मॉइस्चर हो, तभी आप उसे स्प्रे कर सकते हैं. Now earthing up, if you plant it for particularly in light soil, then also earthing up is required. उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाना बहुत ही important है because वो गिर सकता है जब उसमें स्पाइक्स निकलती है, इंश्योरेंस निकलता है तो वो हैवी हो जाता है तो वो गिरने के चांसेस होता है. तो दैट्स वाई लाइट सॉइल है, मतलब सैंडी लॉम सॉइल है, बहुत लाइट सॉइल है तो उसमें आप डीप लगाइए थोड़ा, और बाद में लगने के बाद उसे आप अर्थिंग अप कर दीजिए, इस तरह से थोड़ा मिट्टी चढ़ा दिए तो दैट विल गिव दी सपोर्ट. सो और 20-30 सेंटीमीटर हाइट तक आप उस पर मिट्टी चढ़ा सकते हैं. देन स्टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सम वेराइटीज लाइक सेंसेरी इज वेरी ह्यूज size of the spike, so they require staking. So bamboo stakes are best. आप bamboo का staking करके उसे 2 जगह पे ऊपर और नीचे थोड़ा बांध दीजिए तो it will be giving support. Then mulching in the heavy, particularly where the wheat problem is more. So mulching is very important. So organic mulching with the paddy straw, paddy का जो straw होता है राइस का, वो आप मल्च कर सकते हो
वीडिंग के बाद, या फिर शुगर कैन प्रेस, शुगर कैन की जो ड्राई लीव्स होती है उससे भी आप मल्च कर सकते हो। इस तरह से दैट विल कंजर्व मॉइस्चर आल्सो, एंड दैट विल आल्सो save water also. That will be a advantage of added advantage. Now manuals and fertilizers. So through some of the research, we found that FIM at the rate of 8 ton per hectare should be applied before planting. So well decomposed होना चाहिए FIM, नया एकदम डिकम्पोज होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज दैट विल इन्फेक्ट दी फॉर्म्स। जब FIM अच्छी ठीक तरह से सड़ा नहीं होगा, तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में आप उसमें मिक्स करेंगे सॉइल में और प्लांटिंग करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा न करते हुए आप यू कैन यूज कैस्टर केक, नीम केक ऑल्सो इन प्लेस ऑफ FIM, बट FIM इज चीपर, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अगली क्रॉप है उसमें आपने अच्छी तरह से FIM ऐड किया है तो so you can do it in that way also. 250 kg nitrogen, 150 kg phosphorus, and 20 kg potassium per hectare should be given on the depending on the soil and climate. In that, the half a dose of nitrogen, that is 125, and full dose of phosphorus and potash is given at the basal. Particularly phosphorus and potassium should be given at the basal, means at the time of land preparation. When जब आप बेड्स बनाते हो तभी आप phosphorus और potassium उसके अंदर आप ऐड कर दीजिए, और प्लांटिंग के टाइम पे आप नाइट्रोजन ऐड कीजिए। तो फॉस्फोरस और पोटेशियम है जो दोनों तत्व है, दे आर वेरी इमोबाइल इन नेचर, सो दे रिमेन इन द सॉइल एज सच। उसका मूवमेंट बहुत कम है, इसीलिए उसे बेजल में देना चाहिए। उसे बाद में देंगे तो द बैक्टीरिया विल वर्क ऑन दैट, एंड उसमें से कुछ फॉस्फोरस निकलेगा, फिर प्लांट को अवेलेबल होगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई भी फर्टिलाइजर दो, फॉस्फोरस और पोटेशियम आप उसे बेजल में ही दे दो, जब बल्कि की बात हो। अगर आप थ्रू ड्रिप देना चाहते हो तो यू कैन डिवाइड इट इन दी वीकली बेसिस ऑन दी एंटायर ग्रोथ पीरियड। आप उसके ग्रोथ पीरियड तक आप उसे 2 महीने का आप 2.5 महीने का आप ग्रोथ पीरियड्स करके आप उसे इक्वली उसे डिस्ट्रीब्यूट करके आप भी दे सकते हो थ्रू ड्रिप ऑल्सो। दैट इज वेरी एडवाइजेबल ऑल्सो। यू कैन कट डाउन 80%, इसका 80% आप कट करके भी अगर ड्रिप से देंगे तो उसे यील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाय दैट यू कैन सेव फर्टिलाइजर ऑल्सो, so that is also important. This particular crop also gives very good response to the micronutrient spray. So chelated micronutrients आते हैं, so you can spray them when they are the seed stage पे आप उसे spray कर सकते हो before flowering. Fe, ferrous sulfate, particularly iron का deficiency वो ज़्यादा बताता है, तो आप you can spray 1 or 2 spray of FeSO पर। बट चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है जिसमें सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, तो वो आप उसे स्प्रे करेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर द क्वालिटी फ्लावर्स। Irrigation, at the time of planting a thorough irrigation should be given। प्लांटिंग के समय में एकदम अच्छा सा irrigation उसे देना चाहिए, because when you give the thorough irrigation that will drive out the air pockets from the soil, and it will settle down the soil, so that will be good for the initial growth also. So number of irrigation depends on the type of soil. The lighter the soil, the frequency will be less। मतलब आप लाइट सॉइल है तो 3-4 दिन में आपको इरिगेट करना पड़े। अगर ब्लैक सॉइल है तो आप वीकली बेस पे कर सकते हो, बट ड्रिप इज द बेस्ट ऑप्शन। यू कैन गिव द डे टू डे बेसिस, एवरी ऑल्टरनेट डे पे आप उसे इरिगेट कीजिए। फर्स्ट इरिगेशन एकदम अच्छा दे दीजिए, फिर ऑल्टरनेट डे पे आप उसे इरिगेशन दीजिए, तो वो बहुत ही अच्छा। तो डिपेंडिंग ऑन द साइल टाइप ऑफ सॉइल, ब्लैक सॉइल है तो वीक में एक बार भी लगेगा, आप फ्लड कर रहे हो। अगर आपकी लाइट सॉइल है तो 2 बार भी करना पड़ सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉइल यू शुड गिव द प्रॉपर इरिगेशन। So
फर्टिलाइजर देने के बाद भी इमीडिएटली उसे इरिगेशन देना चाहिए। कोई भी क्रॉप हो, आपने फर्टिगेशन किया, फर्टिलाइजर दिया उसे, तो तुरंत आपको उसको इरिगेट करना चाहिए। और इरिगेशन इज स्टॉप एट द टाइम ऑफ ripening of the corns, means after harvesting करने के बाद, means if whole field have been harvested, you have harvested all the spikes, you should stop the irrigation, because afterward the food material whatever present in the leaf will be goes down into the form development में चला जाता है। तो पूरा हार्वेस्टिंग होने के बाद आप उसको इरिगेशन स्टॉप कर दीजिए, जिससे कि धीरे धीरे slowly वो लीफ विल dry and whatever food material present in the leaf will go into the corms development में वो चला जाएगा। Now harvesting is very important. So particularly the harvesting stage is very important. Here in this picture, I have stored the first picture that you will show the two florets have opened. Lower two florets are open, 2 to 3. Third is just started. So this is the best stage for the local market. Local market के लिए that is the best stage, right? So afterwards the upper florets will open. आप हार्वेस्ट करने के बाद रखोगे तो स्लोली दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसा ऊपर तक वो खुलता जाएगा। अगर आप बाहर भेजना चाहते हैं, फॉरेन भेजना चाहिए, तो सेकंड का है, सेकंड पिक्चर में है, दैट इज द लोअर फ्लोरेट्स, इट शोज कलर्स एंड इट्स जस्ट स्टार्ट टू ओपन। तो ये बेस्ट टाइप है। अगर आपको दिल्ली भेजना है कहीं से दूर से, तो इस तरह से लॉन्गर डेस्टिनेशन में ये एक बेस्ट stage है। You will use a sharp tools. You can use secateurs, knife for cutting, and immediately after cutting you should walk with the bucket of water. That is the bucket में थोड़ा पानी होना, आरओ वाटर होना चाहिए, डीआयोनाइज वाटर होना चाहिए, तो उसमें आप उसको रखते जाइए। तो उससे क्या होगा कि उसकी लाइफ बढ़ेगी, क्योंकि हम जब प्लांट से काटते हैं कोई भी फ्लावर को, तो उसमें ट्रांसपीरेशन, उसमें से वाटर लॉस होता है। लेकिन अगर आप उसे ऐसे ही रखोगे तो वाटर लॉस होता है, तो एयर उसके अंदर चली जाती है, माइक्रोब्स भी आ जाते हैं उसके अंदर, तो उसके साथ जो उसकी जाइलम है, जो अंदर की सिस्टम है, वो प्लगिंग होने के चांसेस है। इसीलिए आपको इमीडिएटली उसको पानी में रख देना चाहिए। लोअर पोर्शन को, थोड़ा लोअर पोर्शन है उसका 2-3 सेंटीमीटर पानी में डूबे, इस तरह से आप उसे रखते जाइए। एंड आप हार्वेस्टिंग करते जाइए उसके साथ, और पानी में रखते जाइए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। Then regarding its yield, the yield of the flower spike depending on the size of the cones. कौन सी साइज की लगाई है? अगर 6 से 8 सेंटीमीटर की बड़ी लगाई है तो you will get more number of flowers. 3 उसमें आई बर्ड आती है तो 3 सूट्स निकलेंगे, तो आप you will get 3। छोटी सी लगाई है 4-5 तो उसमें 2 होती है, 2 हो सकती है आई बर्ड, तो उसमें से आपको 2 प्लांट फ्लावर मिल सकते हैं। तो पर्टिकुलरली डिपेंड्स ऑन दी वैरायटी ऑल्सो। कुछ वैरायटीज है जो बड़े कॉम्स डेवलप करती है, तो उसमें आपको बड़ा सा फ्लावर और बहुत ज़्यादा फ्लावर्स मिलते हैं। एटलीस्ट 3 मिलते हैं, 2 से 3 की आप डील कर सकते हो। छोटे लगाए हैं तो 1.5 फ्लावर जैसे इस तरह से एवरेज बैठता है। सो इट डिपेंड्स ऑन कॉम साइज, प्लांटिंग डेंसिटी। 30x20 भी लगा सकते हो तो मोर प्लांट आएंगे। 30x30 लगा सकते हो। बड़े कॉम्स है तो 30x30 लगाना चाहिए, छोटे है तो 30x20 लगाना चाहिए। So if you plant at 30x20, so it will produce approximately 1,80,000 to 2 lakh marketable spikes. You will get additional income also by sale of the corms and cormels. Corms और कॉर्मेल्स को सेल करके 2-3 साल में आप एडिशनल इनकम उसमें से ले सकते हो। आप 1,50,000 कॉम्स पर हेक्टर आपको चाहिए, तो आप 3 रुपए भी उसकी कीमत गिनोगे तो दैट विल कॉस्ट यू 4 लाख कितना लगता है। अगर 2 रुपये 1 रुपये भी गिनोगे तो 150 लाख तो सिर्फ आपकी कॉम की प्राइस होती है। तो ये ऐसा क्रॉप है जिसमें प्लांटिंग मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। Comparing the production of corms and cormels also, so you will get the flower है उसका, तो at least it will sell at the rate of 3 rupees per flat cow आपको मिल सकता है, depending on the market. मार्केट के हिसाब से 3 रुपीज 5 रुपीज तक वो जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी स्पाइक साइज क्या है उसकी और फ्लावर की क्वालिटी क्या है उसके हिसाब से। तो यू विल गेट गुड इनकम over the period of time. Now lifting corms and cormels, then when flowering is over,
so you should stop the irrigation, right? So when the 25, फिर आप थोड़ा उसे हल्का सा खोल के देख सकते हैं, तो जब फील्ड की 25% गवर्नमेंट्स आपकी ब्राउन हो गई है, राइट, तो फ्लावरिंग के इट टेक्स 30 to 45 डेज, 1-1.5 महीना लगता है फील्ड में फ्लावरिंग होने के बाद। फिर आप उसको पानी बंद कर देंगे आप उसको, तो धीरे 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 द लीव्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो एंड प्लांट ट्विस्टेड डाउन टू द ग्राउंड, और धीरे धीरे प्लांट नीचे गिर सकता है। इरिगेशन स्टॉप कर दिया जाता है, फिर स्पेड से आप उसे निकाल के फिर यू कैन सॉर्ट आउट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द कॉम्स। फिर क्योरिंग किया जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हार्वेस्टिंग करने के बाद उसे शेड में 2 लेयर में एटलीस्ट, एक के ऊपर दूसरा हो, इस तरह से लेयर में 2 या 3 के लेयर में उसे फैला दिया जाता है, जैसे अनियन में किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से 15-20 दिन उसे ऐसे ही रखा जाता है। उसमें से जो सॉइल लगी हो, मिट्टी हो, उसे क्लीन कर किया जाता है। सो एडहरिंग सॉइल should be removed after lifting, so it is placed in the steady condition but well ventilated. तो फॉर 15 डेज क्योरिंग के लिए उसे रखा जाता है, और लेयर उसका 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कौन सा लेयर है। तो इस तरह से आप उसे क्योरिंग कीजिए। एंड आफ्टर क्योरिंग एंड क्लीनिंग, सो आफ्टर क्योरिंग एंड क्लीनिंग दी fungicides and insecticide like Cyclone insecticide dust है जो insecticide है, और diathenom 45 है जो fungicide है। You can use carbendazim also, तो उसमें उसे मिक्स किया जाता है। ये मटेरियल, ये जो फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, उसकी ट्रीटमेंट दी जाती है। तो बिफोर स्टोरेज उसे डस्ट में उसे मिलाया जाता है। एंड आफ्टर क्लीनिंग एंड आफ्टर ट्रीटमेंट देयर कॉम्स आर स्टोर्ड इन परफोरेटेड ट्रेज, जो परफोरेशन वाली ट्रेज आती है उसमें आप रख सकते हो, एक वेल वेंटिलेटेड रूम में रख सकते हो। यू कैन पैक देम इन दी एग्री शेडनेट बैग, जो एग्री शेडनेट बैग आती है, शेडनेट बैग आती है, उसमें शेडनेट बैग बना के, या फिर परफोरेटेड होल वाली जो बैग्स आती है उसमें आप उसे अच्छी तरह से पैक करके आप यू कैन पुट देम इन दी कोल्ड स्टोरेज ऑल्सो। कोल्ड स्टोरेज में आप रख सकते हो। रूम में रखना हो तो 27 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ऐसे कोल्ड रूम में आप उसे रख सकते हो ट्रे में। तो इस तरह से आप उसको नेक्स्ट ईयर के लिए संभाल सकते हो। सपोज आप गार्डन के लिए आपने थोड़ी सी कॉम्स है, तो आप ऐसा कीजिए, एक अर्दन पॉट ले लीजिए, उसमें राई जो रेत है, ब्लैक सैंड या व्हाइट सैंड हो, उसका एक छोटा सा लेयर कीजिए, फिर कॉम्स रख दीजिए, उसके ऊपर फिर से ये डाल दीजिए, कॉम्स के ऊपर मिट्टी डाल, रेत डाल दीजिए। इस तरह से लेयर करके आप उसे स्टोर कर सकते हो। लेकिन स्टोर करने के बाद आप ये एश्योर कीजिए कि वहाँ पे जो एंड्स है उसका इन्फेस्टेशन न लगे, तो पीरियडिकली देखें, उसके इर्द गिर्द आप इंसेक्टिसाइड का पाउडर कुछ छिड़क दीजिए, जिससे करके आपने ट्रीट तो किया है फिर भी थोड़ा उसको आप संभाल सकते हो। तो इस तरह से आप होम कंडीशन में भी इसे संभाल सकते हो, या फिर कैरेट में छोटी सी ट्रे में लेके उसे डार्क रूप में हम जैसे अनियन को संभालते हैं ऐसे संभाल सकते हो। पर्टिकुलरली मॉनसून में उसे संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉनसून में जब मॉइस्चर बढ़ता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो स्प्राउट निकल आते हैं, तो उससे उसे संभालना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और पीरियडिकली उसे देखना चाहिए। अगर उसमें कुछ फॉर्म्स खराब है तो उसे तुरंत निकाल देना चाहिए, they will infect the others. So that is very important. Now, grading of flowering is also very important. Flowering का जो ग्रेड है वो बहुत ही Dr. Mukesh, sorry to interrupt you. important है। So just you have to finish in coming next to 2-3 minutes, because we have next speaker also. Okay. It's 8:50 I now. will. Please. Okay. So spikes are graded on the basis of height of the spikes and number of florets. तो उसके grades बनाए गए हैं, fancy, special, standard और utility। तो उसमें minimum जो fancy है, जिसमें spike length 107 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो 16 फ्लोरेट्स उसके अंदर है, जो particularly export के लिए बहुत अच्छे।
स्पेशल है जो 15 है, जो एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी है। तो ये नंबर ऑफ फ्लोरेट्स है, ये भी कौन सी वैरायटी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। कुछ वैरायटीज है जो सेंसे है जो 15-16 आपको फ्लोरेट्स देती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द लेंथ ऑफ द स्पाइक यू शुड ब्रीड एंड अकॉर्डिंगली आप ये कर सकते हैं। देन पैकेजिंग में हम देख सकते हैं कि ऐसे बंच बनाए जाते हैं उसको, और उसे अपराइट रखा जाता है, तो साइड में नहीं रखा जाता है, किसी बॉक्स में, कार्डबोर्ड बॉक्स में ऊपर सीधा रखा जाता है। और कॉरिगेटेड पेपर में यू कैन रैप देम, और उसे आप फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए आप उसको बेच सकते हैं उसको। इनिशियली थोड़ा ठंडा पानी में नीचे डुबो के कोल्ड स्टोरेज में थोड़ा रख सकते हैं, बाद में उसे लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रांसपोर्टेशन में बेच सकते हैं। कुछ पल्सिंग सॉल्यूशन है जैसे कि सुक्रोज है, नाइट्रिक एसिड है, ऐसे सॉल्यूशन में उसे 2-3 घंटे की ट्रीटमेंट देके फिर आप उसे दिल्ली भेजना चाहें तो आप उसे भेज सकते हैं। 4 से 8 डिग्री में आप उसे अपराइट में आप 1 हफ्ते तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो थ्रिप्स एक आती है जो बहुत छोटी इंसेक्ट होती है, ये एक्चुअली मैग्नीफाइड है, तो इमेज है। तो ये उसके ऊपर लीफ के ऊपर, पर्टिकुलरली वेरी टेंडर लीफ के ऊपर, और जब टेंडर जाती है उसके ऊपर वो रास्पिंग करके उसके ऊपर से ग्रीन मैटर को वो उसमें से सेल्स को सक करके उसके कंट्रोल के लिए आप ऑर्गेनिक या नीम ऑयल का वीकली इंटरवल पे 3 ml पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कीजिए तो उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। फिप्रोनिल है एक दवा है जो आप 1 ml लीटर आप उसे स्प्रे कर सकते हैं। कट वॉर्म है, पर्टिकुलरली नाइट में आती है, और उसकी जो कॉर्नर्स होती है, जो साइड्स वे होती है, जो लीव्स होते हैं उसको खा लेती है, तो उसे आप लैम्डा साइहेलोथ्रीन से आप उसे स्प्रे करके उसे कंट्रोल कर सकते हो। फिर एक लीफ ईटिंग कैटरपिलर आती है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, तो उसको कंट्रोल के लिए आप नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हो, उसको भी कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर नोवाल्यूरन आप 7.5 ml पर 10 लीटर में स्प्रे कर सकते हो। फिर माइट्स है जो आप देख नहीं सकते हो, बट लीव्स होते हैं वो नीचे स्पाइडर वेब जैसा स्ट्रक्चर उसके ऊपर बन जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, तो सेल सेप को सब करती है नीचे से, और आपकी जो लीव्स है वो पेल येलो हो जाते हैं और थोड़े वीक हो जाते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए आप प्रॉपर गाइड का यूज कर सकते हो। कुछ डिजीज है जैसे कि कर्विलुरा ब्राइट है, तो उसको स्प्रे करने के लिए उसमें आप देख सकते हैं कि उसकी टीप पोर्शन से वो डायरेक्ट होता जा रहा है इन्फेक्शन। उसके कंट्रोल के लिए आप डायथेनम 45 है उसका स्प्रे कर सकते हो। कॉपर क्लोराइड भी चलता है। देन स्टोरेज रोल जो स्टोरेज में होता है पेनिसिलियम ग्लाइकोलिसिस, तो उसको आप क्लोराइड की ट्रीटमेंट देके के पाउडर में या फिर बारिस्टीन के पाउडर में मिला के आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। और अगर स्टोरेज रॉट दिखता है तो ऐसे रॉटेड फॉर्म्स को आप तुरंत ही डिस्कार्ड कीजिए, अदरवाइज दे विल डैमेज दी अदर्स। कुछ विल्ट है जो फ्यूजेरियम स्पोरम है जिसमें इस तरह साई हो जाता है, पौधा सूख जाता है, तो उसके लिए आप मैनकोजेब दे सकते हो उसका, या फिर ड्रेंच कर सकते हो आप, पर्टिकुलरली बाविस्टीन से ड्रेंच कर सकते हो। पोर फॉर्म रोड पाया जाता है जिसके के लिए मैनकोजेब 0.2% कर सकते हो। कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जो पाए जाते हैं, जैसे कि हायर लेवल ऑफ फ्लोराइड हो तो टीप, उसकी जो लीफ की टीप है वो बंद होना लगता है और धीरे 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 वो बढ़ता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप फ्लाइटॉक्स पाउडर आता है, उसे 50.3% मतलब 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। जियोट्रॉपिक बैंडिंग पर्टिकुलरली स्टोरेज के समय पे आता है, उसे क्या करते हैं, जब आप उसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो नीचे की सतह पे जो ऑक्सीजन है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और वो सेल एलोंगेशन के लिए, मतलब सेल डिवीजन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, सेल को एलोंगेट करने में रिस्पॉन्सिबल है। तो वहाँ पे सेल की ग्रोथ बढ़ जाने की वजह से जो स्पाइक है ऊपर की तरफ बैंड हो जाती है, तो ऐसी बैंड हो जाती है, इसी की वजह से होता है। तो
ऐसी सिचुएशन इस ये जो क्रॉप है उसकी जो स्टोरेज है आपको वर्टिकल करनी चाहिए, ना कि हॉरिजॉन्टल। तो भी आप उसे लाए तो तुरंत आपको वर्टिकल कोई बॉक्स में या फिर बकेट में आप पानी रख दीजिए, तो दैट विल बी that you can cure dirt with planting. So this is about the cultivation practices of Gladiolus. So thank you so much for patient hearing. Over to you, Sachin. Thank you, Dr. Mukesh, for sharing a very valuable information on the very important crop that is on orchid. You have given a wide information right from the cultivation and its pest and disease management also. So thank you very much for your guidance. Now we have the another crop on today's webinar, that is on the Anthurium. Today we have with us Dr. Hardik Shah, Assistant Professor of Horticulture from ASPEE College of Horticulture and Forestry, Navsari, Agriculture University, Navsari. His did is PhD in Floriculture and Landscape Architecture. He has a wide experience of around 13 years in the field of floriculture and landscaping. He has published so many articles in the various national and international journals. One of few articles are influence of different grade of nitrogen and potassium on growth and yield of dendrobium orchids, influence of inorganic and organic fertilizers on growth and yield of dendrobium orchids, cultivated Sonia 17. So he has also worked on the evaluation of adenium genotypes and physiochemical and flowering characters. So today we have with us a very research oriented and knowledgeable person. Dr. Hardik Shah is with us. He's going to guide us on Anthurium. So I welcome him on behalf of Indian Nurserymen Association, and I request him to give a guidance on the cultivation of Anthurium crop. So over to you, Dr. Hardik. Thank you. Thank you very much, Sachin. So good evening, one and all. Today I'm going to, is it visible slide? Yeah, just do the full screen. Okay. Okay. So today today my topic of this discussion is Anthurium, production technology of Anthurium. So everybody, this is the Anthurium flower. You must have seen these flowers before, and it's a very attractive flower and a very high value flower, because normal price of this Anthurium flower ranges between 10 to 25 rupees per flower, right? So let's talk about it and the production technology about Anthurium. So first of all, Anthurium is belongs to Araceae family, and the botanical name is Anthurium species. The number of species are there, almost 500 to 600 species in this Anthurium genus. Now it is originated from tropical America, that is South America, Brazil and other countries. Basically, this plant belongs to a tropical rainforest, and it is in abundant quantity over there. And hello. Yeah, you are audible. Please go ahead. Okay. And from that, it is domesticated to all other parts of the world. It is also there in a Asian tropical forest. Now, the Anthurium means it is consists of two Greek words, that is anthos and aura. So anthos means the flower, and the aura is the tail, means the tail, which is referring to the spadix of this particular flower. Now here in this picture of Anthurium flower, we can see this spathe, this color portion of the flower is known as a spathe, while this tail-like structure is known as spadix, and the whole this spathe and spadix is rest on this peduncle. So, and this spadix is consists of so many flowers, as seen in this inside picture. So basically, this is the small botanical description of this Anthurium. Okay. Now move forward. The major Anthurium producer in the world is Netherlands,
Mauritius, Hawaii, Thailand, Singapore, Sri Lanka, etc. In India, we are not a major producer in the world, but in India, Arunachal Pradesh, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra even are some parts of Maharashtra is producing Anthurium. Now, Anthurium stands second in sale after cut orchid in the market. They are used, these Anthuriums are used for cut flowers, cut foliage. It is also used as a foliage plant and as well as indoor pot plants. Almost 55.2 million cut flowers are produced in India, right? For export, it's the best flower because of the miniature size. It's the flower is doesn't have much bulk. ये फ्लावर में इतना बल्क नहीं होता है, सिर्फ एक पेडिंकल होता है जो एक डंडी जैसा होता है और उसके ऊपर सिर्फ वो एक छोटा सा फ्लावर होता है हार्ट शेप का. सो उसका जो बल्क होता है वो बहुत कम होने की वजह से इट इज हैविंग अ गुड पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट एंड उसमें लीफ भी कुछ होते नहीं है. दैट इज वाई बल्क कम रहता है एंड उसकी वर्ज लाइफ भी बहुत अच्छी है. नॉर्मल दिस एंथुरियम फ्लावर की वर्ज लाइफ 20 to 30 days तक रहती है. सो इट इज रियली वेरी गुड फ्लावर. और वो nowadays this Anthurium, due to its unique shape, it is a symbol of richness. वो मैरिज फंक्शन में वगैरह में या तो बुके में जब एंथुरियम होते हैं तो उसकी रिचनेस बढ़ जाती है, उसके प्राइस बढ़ जाते हैं. एंड ड्यू टू हार्ट शेप एंड रेड कलर ऑफ वेरी ब्राइट रेड कलर, many a times it is also a symbol of love and it is also बुके में वगैरह में मतलब लव्ड वंस को देने के लिए भी बहुत यूज होते हैं. Now, classification of Anthurium. There are number of species, as I told you, 500 से 600 species Anthurium की है, जिसमें से कुछ species जो है वो कट फ्लावर है, कुछ foliage के लिए यूज की जाती है और कुछ ड्यूअल पर्पस है. So, very popular species is Anthurium andrenium, जो बहुत ही पॉपुलर है, जिसमें जो कट फ्लावर में, और दूसरी है रोबस्टम, बैकेरी, ब्राउनी, ऑर्नेटम. जबकि फॉलिएज में Anthurium weichi, then Crystallium, Pendulatum, Splendidum, और कुछ जो है Anthurium amnicola and Anthurium ornatum, जो ड्यूअल पर्पस है, जो कट फ्लावर और foliage दोनों देती है. Okay, so here are some photograph of this species Anthurium andrenum, like this. Then this is a cut foliage Anthurium, Anthurium flavinavarium. Then Anthurium crystallinum. This over here, this Anthurium is not used for cut flower. इसके फ्लावर यूज नहीं होते, इसके foliage यूज होते हैं बुके में फ्लावर अरेंजमेंट में वगैरह में. This is Anthurium weichi. Now, जब कट फ्लावर की बात आती है तो एंथुरियम के जो कट फ्लावर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट फ्लावर. वन इज स्टैंडर्ड, ओबेक एंड ट्यूलिप. वी विल सी वन बाय वन. हियर इज द स्टैंडर्ड एंथुरियम कट फ्लावर. नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथुरियम कट फ्लावर? इट इज हैविंग अ, ये जो स्पेथ है उसका, नाउ वी नो व्हाट इज द स्पेथ है, हमने पहले देख लिया है स्पेथ क्या है. तो वो जो स्पेथ होता है वो हार्ट शेप का होता है. तो वैसे जो कट फ्लावर्स होते हैं, वैसे जो फ्लावर्स होते हैं उसको स्टैंडर्ड एंथुरियम बोलते हैं, व्हिच इज इट इज अ स्टैंडर्ड एंथुरियम, राइट. उसके बाद आते हैं ओबेक. नाउ ओबेक इज हैविंग अ 2 टोन ऑफ कलर. दैट इज मतलब जो स्पेथ होता है उसमें 2 टाइप के कलर होते हैं. दैट इज बाई कलर स्पेथ. जैसे कि ये फोटोग्राफ में दिख रहा है आपको, वन इज ग्रीन एंड वन इज व्हाइट. सो नॉर्मली वैसे ऐसे जो एंथुरियम्स होते हैं 2 कलर के, टू टोन एंथुरियम इज नोन एज ओबेक एंथुरियम. नॉर्मली इसमें जो एक कलर होता है वो नॉर्मल ग्रीन होता है और बाकी के कलर मेजर मतलब व्हाइट या तो पिंक, रेड ऐसे कलर्स होते हैं, लेकिन एक कलर ग्रीन रहता है. सो दिस इज ओबेक. एंड थर्ड वन इज ट्यूलिप. सो ये ट्यूलिप का जो स्पेथ है उसका जो शेप होता है वो हार्ट शेप नहीं होता है, उसकी जगह वो अपराइट कप जैसा होता है. एंड वो थोड़ा बहुत ट्यूलिप जैसा दिखता है.
इरेक्ट होता है. So this particular ये फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है इस तरह से. It is tulip or anthurium. Now color wise different variety of anthurium. So the red is obviously the most popular color for in anthurium. So there are so many varieties like Jewel, Hawaiian red, Ozaki, Cancan, tropical, right? Tina red, curry red, then orange, Nita, sunset orange, white में Acropolis, Mona Mist, Ivory, then pink में Agnihotri, Pesan, Stripe, pink Hawaii, green में Midori, Esmeralda, Acapana, then maroon में Caesar, and light peach में Vogue. So these are the color-wise varieties available in the market. This is the tropical. The tropical is one of the most popular variety in anthurium. This is a flame, Caesar, Cheers, a pink, Salasaga, Mering, Acropolis, Lima, Titicaca, Midori. These are the variety, green color variety, Fantasia. Now, even more colors have been developed in this anthurium. These all are standard anthuriums. Choco, which is like a chocolate color, brown color. Safari. Now, this is a tulip, tulip anthurium. Then Previa, Sevilla, Lady Jane. So these are the different varieties available in the market. Now this is the color-wise market share of anthurium flowers. So majority of market share of anthurium flowers is occupied by red flowers. Almost 40% market share. जितने भी एंथुरियम बिकते हैं मार्केट में उसमें से 40% मतलब 100 में से 40 एंथुरियम रेड होते हैं. देन पिंक, ग्रीन, मिक्स्ड, व्हाइट, क्रीम, वो सब थोड़े थोड़े होते हैं, राइट. लेकिन एंथुरियम, रेड एंथुरियम इज मोस्ट इन डिमांड और सबसे ज्यादा ग्रो भी किए जाते हैं और सबसे ज्यादा बिकते भी वही है. नाउ सम डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ कट फ्लावर. अगर एंथुरियम का कट फ्लावर है वो कैसा होना चाहिए? सो स्पेथ जो होता है उसका, अगर स्टैंडर्ड की बात करें हम तो वो हार्ट शेप होना चाहिए. देन अगर और नॉर्मल केस में सिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब स्पेडिक्स के दोनों साइड पे एक जैसा होना चाहिए स्पेथ. उसके ऊपर ब्लिस्टर्स मतलब उबड़ खाबड़ जो स्किन होती है वो ज्यादा होनी चाहिए, ब्लिस्टर्स उसमें ज्यादा होने चाहिए और कलर यूनिफॉर्म होना चाहिए. शेडिंग ऑफ कलर्स आर नॉट एक्सेप्टेबल कैरेक्टर इन कट फ्लावर ऑफ एंथुरियम. नाउ द स्पेडिक्स जो होती है वो स्पेथ से बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, एंड इट शुड बी इंक्लाइंड टू स्पेथ एट 30 to 40 degree. The pedicel should be long, straight and sturdy, right? Because basically the pedicel have to bear the weight of this spathe and pedix. So वो straight होनी चाहिए, long होनी चाहिए and sturdy होनी चाहिए. So that is the character, desirable characters. Now how to propagate this anthuriums? So most easiest method of propagating anthuriums are through seeds. It is very easy, but it will take 2 to 3 years of to flower. So this is not desirable for commercial production. अगर हम सीड से प्रोपेगेट करेंगे एंथुरियम को तो वो कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए बेहतरीन नहीं होगी. और दूसरी एक प्रॉब्लम होती है जब सीड से हम प्रोपेगेट करते हैं तो देन एट दैट टाइम वी डोंट नो कि जो कलर आएगा सीड से, इट्स अ सेक्सुअल प्रोपेगेशन, तो उसमें पता नहीं चलेगा कि उसकी मतलब उसका कैरेक्टर्स क्या होगी ग्रो होने के बाद. सो इट इज नॉट डिजायरेबल टू ग्रो एंथुरियम थ्रू सीड्स. सो सकर्स आर मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड बिकॉज नॉर्मली ये जो एंथुरियम्स है वो बहुत सारे सकर्स ग्रो मतलब राइज होते हैं उसमें प्लांट में से फ्रॉम बेस, और इट विल टेक 1 to 2 years टू फ्लावर. नॉर्मली सेकंड ईयर में फ्लावरिंग में आ जाता है वो प्लांट. सो सकर्स आर रियली चीप एंड गुड मेथड फॉर प्रोपेगेशन ऑफ एंथुरियम. और जो सकर्स होते हैं वो ट्रू टाइप भी होते हैं, मतलब जो मदर प्लांट होता है उसके ही जैसे ही फ्लावर्स उसमें आते हैं. सो वी नो दैट अगर फ्लेम में से लेते हैं सकर्स तो फ्लेम का ही सकर आएगा, प्लांट आएगा, लाइक दैट. कटिंग्स इज आल्सो गुड ऑप्शन.
लेकिन कटिंग जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, और कटिंग में भी प्लांट 3-4 साल पुराने होने चाहिए, उसके बाद ही उसमें से कटिंग कर सकते हैं। और दूसरा कि कटिंग लगाने के बाद भी ऑलमोस्ट इट टेक्स 2 to 3 years टू फ्लावर। सो अगेन वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और दूसरी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है वो है टिश्यू कल्चर, जो बहुत ही रैपिड मेथड है, और उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स एक साथ बहुत ज्यादा, वी ऑल नो दैट बहुत सारे ज्यादा प्लांट एक साथ बन सकते हैं, एंड यूनिफॉर्मिटी आती है। सो टिश्यू कल्चर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, एंड नाउअडेज इन अ मार्केट अगर कॉमर्शियल बात की जाए तो उसके लिए टिश्यू कल्चर के प्लांट्स ही इस्तेमाल होते हैं। सो दिस आर द पैडिक्स, और उसमें ये जो ये दिख रहा है दैट इज द सीड ऑफ एंथुरियम। उसमें से ये एक जो दाने जैसा होता है उसमें से 3-4 सीड्स निकलते हैं, एंड इट विल ग्रो लाइक दिस, बट इट विल टेक ऑलमोस्ट 3 to more than 3 years to flower. Then suckers, as seen in this picture, there is number of suckers over here. तो उसमें कुछ नहीं, it is very easy to detach it, हम हाथ से ही उसको डिटेच कर सकते हैं इजीली, और it is also advisable। लेकिन सकर्स जब मतलब जब हम सकर को डिटेच करें तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि सकर बहुत बड़े ना हो जाए, अदरवाइज इट विल हार्म टू द मदर प्लांट। सो छोटे छोटे सकर्स को अगर हम अलग कर लेंगे तो इट विल इजीली अलग हो जाएंगे, और फिर उससे डैमेज भी कम होगा प्लांट्स को। देन इफ कटिंग की बात करेंगे तो उसको जैसे यहाँ पे दिखाया गया है इस तरह से करना चाहिए ताकि नोड रहे, और फिर उसको प्लांट करने से यू विल गेट अनदर प्लांट। दिस इज द सकर। उसको डिटेच करने के बाद लाइक ये रूट रहने चाहिए ऐसे। टिश्यू कल्चर, as we know, from one plant we can make a number of plants, 1,000 number of plants we can make from single plant. Now moving towards the production technology, so these are the environmental factor. So the most affecting factor for Anthurium is light. Anthurium required almost 20,000 to 25,000 lux of light for perfect growing condition. Now what is that 20,000 to 25,000 lux light? So in a country, tropical country like India, we are normally receiving more than 30,000 lux per day. हमारी जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो 30,000 से ऊपर होती है। सो इन अ कंट्री लाइक इंडिया वी रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट 50,000 से ज्यादा होती है हमारा लक्स। तो हमारी in India we required 60 to 80% shade net for growing Anthurium। अगर शेड चाहिए हमें कितना 60 to 80%, ताकि ये 20-25,000 लक्स तक लाइट हम ला सके। सो अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी तो द एंथुरियम के जो लीफ होंगे उसमें स्कॉचिंग इफेक्ट, वो जल जाएंगे, स्कॉचिंग इफेक्ट होगी लीफ में, एंड फ्लावर भी इमेच्योर रहेंगे, ज्यादा अच्छे फ्लावर नहीं रहेंगे, उसका शेप नहीं रहेगा। सो लाइट प्ले वेरी क्रूशियल रोल while we are growing in Anthurium, and 80% is very sufficient for control the intensity of light। अगर हम कुछ मतलब थोड़े नॉर्थ की बात करें जहाँ पे सनलाइट की इंटेंसिटी कम रहती है, तो उस टाइम वहां पे 60 to 80% शेड नेट विल बी ओके, मॉडरेट इंटेंसिटी देगी लाइट। देन टेम्परेचर, सो बेसिकली दिस इज द ट्रॉपिकल प्लांट एंड इट रिक्वायर्स अ गुड, मतलब अच्छा हाई टेम्परेचर चाहिए उसको ग्रो होने के लिए। सो 20 to 25 डिग्री Celsius temperature is good for growing Anthurium. If this temperature falls below 18 or 15, then again the growth will be ceased, उसका growth कम हो जाएगा एकदम। It cannot tolerate low temperature। ये जो Anthurium है लो टेम्परेचर, एक बार वो ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन लो टेम्परेचर Anthurium cannot tolerate, and if it is a freezing temperature then it will die। So the care should be taken कि एंथुरियम का जहाँ पे आपने एंथुरियम रखे, जहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन ना हो जाए।
इवन अबव 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाएगा तब भी स्कॉचिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा और ग्रोथ जो है वो सीज हो जाएगा, कम हो जाएगा. Then humidity. It is a humidity loving plant, and it requires high humidity in throughout the day and night. So it requires 60 to 80% humidity all over the day and night. अगर humidity कम हो जाती है, then again it will slow down the vegetative growth and flower development भी बहुत poor हो जाएगा. और अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लाइक 90-95%, देन इट विल नॉर्मली प्लांट को उससे कोई असर नहीं होता है, लेकिन ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी फंगल बैक्टीरियल डिसीज ज्यादा होने लगते हैं. सो ह्यूमिडिटी विथ गुड एरेशन, दैट इज परफेक्ट वेंटिलेशन विल बी वेरी गुड फॉर ग्रोइंग एंथुरियम, राइट? And for CO2 concentration, it is just like other plants. It requires 2000 to 3000 ppm CO2 concentration. And due to it's a shade loving plant, so it requires partial shady location. So this is brief regarding environmental factor. Now, where in which media you can grow this anthurium? So basically you can't grow anthurium in soil because anthurium is epiphytic in nature. So अगर आप उसको soil में grow करना चाहेंगे, then slowly and slowly the root will decay and the plant will suffer. So it requires good aeration for growing, good water holding capacity, high in organic matter, high porosity, so aeration ज़्यादा हो जाए, low salt concentration, must provide good encourage उसको अच्छा मिलना चाहिए प्लांट को, उसकी pH 5.5 to 7 and EC should be less than 1. And उसका texture अच्छा होना चाहिए. So some of the example which is used of media which is used for anthurium is sugarcane bagasse, rockwool, sawdust, tree bark, coco peat, which is very popular media, perlite, vermiculite, coconut husk, etc. So these are the media used for growing anthurium. Now anthurium can't be grown in open. ये जो एंथुरियम है उसको आप ओपन में ग्रो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट. सो वी रिक्वायर सम एनक्लोज स्ट्रक्चर. सो सम ऑफ द पॉपुलर स्ट्रक्चर फॉर सम ऑफ द suitable structure for anthurium growing is poly house, low cost poly house like this, which for ventilation हमने क्या ये poly house में जैसे देखा है आपने कि चारों ओर से ये खुला है. So such kind of poly house is used for anthurium growing. And उसके poly house के अंदर में एक लेयर जो होता है वो सेडनेट का होता है. यहाँ पे maybe 65 to 80% sednet is used for this anthurium production. Then even we can use sednet house along with rain shelter. ये फोटोग्राफ में जैसा दिख रहा है ऊपर यहाँ पे रेन शेल्टर है ताकि एंथुरियम पे डायरेक्ट पानी ना गिरे. एंड दिस सेडनेट विल कट डाउन द सनलाइट एंड प्लांट को आप 20 to 30% सनलाइट ही मिलेगा. सो लाइक दिस यू कैन ग्रो एंथुरियम इन सेडनेट हाउस. इवन दिस इज द सेडनेट हाउस along with rain shelter. Again, these are low economic kind of things for growing anthuriums. Otherwise, even we can having fan and pad or high value poly house. ऐसा poly house जिसमें एक तरफ जैसे फैन हो, एग्जॉस्ट फैन, दूसरी तरफ पैड हो, ताकि पैड में से मॉइस्ट एयर अंदर दाखिल हो, which is cool the temperature. जैसे हमारे hot country like India needs such kind of special treatment for anthurium growing, ताकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो कूल रहे. और यहाँ से ये जो पैड्स, ये जो फैंस है वो उसमें से गर्म हवा बाहर निकलती रहती है और ये जो पैड्स है उसमें से ठंडी हवा अंदर दाखिल होती रहती है along with moisture. So it will produce a very ideal condition for anthurium growing. So here in this shade house we have grown anthurium in a pot. तो नॉर्मली एंथुरियम पॉट में भी ग्रो हो सकते हैं और एंथुरियम बेड में भी ग्रो हो सकते हैं. पॉट में ग्रो होने के लिए एंथुरियम में जिस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोकोनट हस्क, देन चारकोल, देन ब्रिक्स,
पीसीस, ऐसे कुछ मीडिया का यूज होता है ताकि पानी ज्यादा भरा ना रहे एट द रूट जोन में. So this kind of media are used for pot culture, and in some planting in bed is also advisable. जैसे कि इसमें बना है, this is the low cost bed. यहाँ पे बेड्स में एंथुरियम प्लांट किए जा रहे हैं like this. Now over here media is cocopeat और sugarcane bagasse और perlite, vermiculite, वो सब मिक्स करके बनाया जाता है. लेकिन उसमें सॉइल का यूज नहीं होता है. सॉइललेस मीडिया में ही एंथुरियम ग्रो करना चाहिए. Even nowadays this turf is plastic turf is available along with this drainage hole, which is very good option. यहाँ पे क्या होता है, बीच में यहाँ पे जो बेड बनाए जाते हैं, पहले इसके नीचे जो लैंड प्रिपरेशन की जाती है, तो यहाँ पे जो मिडल लाइन है, तो मिडल लाइन जो है वहाँ पे वहां से बाहर की ओर स्लोप रखा जाता है और फिर उसके ऊपर ये ट्रफ बिछाए जाते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, जो एडिशनल वाटर है, वो इस ड्रेनेज होल में से बाहर निकल जाए. सो दिस ट्रफ्स कैन बी यूज्ड फॉर एंथुरियम. जैसे कि हमारे ये नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी में जो ग्रीन हाउस है उसमें एंथुरियम उगाए हैं, उसमें ये ट्रफ में उगाए थे हमने. लाइक दिस इज कोकोपीट एज अ मीडिया. दिस इज अ photograph of that trough. So these anthuriums have been planted in coco peat only. Now this is coconut husk जिसमें anthurium plant किए गए हैं. This is coco peat plus perlite. Now spacing, जब हम बेड में एंथुरियम ग्रो करते हैं, देन ये जो बेड की विड्थ होती है वो 1.2 मीटर जितनी होती है. एंड between plant between row the distance is 30 centimeter, and between plant in the row distance is 40 centimeter. So this is how crisscross planting, zigzag planting has been done in the anthurium, and it is shown in this figure. Now irrigation, this is very crucial part of anthurium growing because anthurium requires very good quality of water with ample quantity. Now basically rainwater is the best for anthurium, but we can't have rainwater for the whole year. So RO water is required, or water from natural sources like river is required for anthurium growing. And it is moisture loving plant, so you have to give constant moisture, 60 to 80% moisture to the plant. So irrigation is one of the key factor to provide moisture. And the daily requirement of the plant is water requirement of the plant is very high. It requires almost 2 liter water per day in a form of mist or in a form of sprinkler, so that it will retain moisture throughout the day. And in the night it is advisable that night period should be somewhat dry. It should be around 50 to 60% humidity during night period, and more than 70% humidity during daytime. So you have to manage likewise कि रात को ज्यादा मॉइस्चर न हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड वाटर इन अर्ली मॉर्निंग एंड आफ्टर 12 फ्रॉम 12 to 2 हम उसको वाटर प्रोवाइड करते हैं. इन समर मंथ वी ऑल्सो वी हैव टू अगेन वाटर इट at 3 or 4 o'clock, but not after that, because उसके बाद अगर वाटर प्रोवाइड करेंगे तो पूरा नाइट वो गीला रहेगा, and it will invite so many of fungal or bacterial disease, which is very harmful for the crop. Now for talking about fertilizers, it is very low feeder, उसको ज्यादा fertilizers नहीं चाहिए. Then 3 the fertilizers NPK in a 3:1:1 ratio for vegetative growth, and the fertilizers should be given with water in the concentration of 0.1%. That is 1 gram fertilizer in a 1 liter of water. So it's very low. And for flowering it requires 1:2 in a form of in a ratio of 1:2:2 and NPK, that is nitrogen, phosphorus and potash for flowering, and that too
1%, 0.1%, and this fertilizers should be provided twice in a week. That 0.1% fertilizers should be provided twice in a week, and organic spray at fortnight. Organic spray of cow urine, or it could be like a micronutrient spray or something like that. But foliar fertilizers, foliar fertilizers most appropriate for Anthurium. Now some cultural practices of Anthuriums are staking for giving encourage to the plant. प्लांट को हमें सीधा रखने के लिए स्टेकिंग करना चाहिए. Then pruning of leaves. Anthurium provides so many leaves. Anthurium grows so many leaves that the older leaves will slowly it get decayed, and it will invite disease and pest. So we have to remove that older leaves, and even some leaves जो बहुत बड़े leaves हो जाते हैं और flowers को ढक देते हैं, वैसे leaves को भी हमें prune timely करना चाहिए, ताकि flowers को sunlight, जो थोड़ी बहुत sunlight हम इसको देते हैं, वो flowers को भी मिले, and it will produce color. अगर flowers leaf के नीचे चले जाएंगे, then it will not evenly colored. और अगर आप, हमने आगे भी बात की, जो flower evenly colored नहीं होंगे, उसके market में value नहीं रहेगी. So for that purpose, pruning of leaves is required, and removal of suckers. अगर हम suckers remove नहीं करेंगे, plant will produce more. बहुत सारे suckers produce करता है ये plant. अगर हम ये suckers को timely remove नहीं करेंगे, तो plant population मतलब बहुत high हो जाएगा, बहुत सारे leaves हो जाएंगे. So again the problem will be the same. So छोटे छोटे suckers जो होते हैं, मतलब 3-4 suckers रहने देने चाहिए, उसके बाद के suckers remove करने चाहिए. Though removal of suckers will decrease the number of flowers per plant. So उसको बहुत ही ट्रिकली, मतलब कुछ सकर्स रहने देने हमें, 3-4-5 सकर्स, और उसके बाद के सकर्स रिमूव कर देने. Now harvesting कब करना है? जब स्पेथ, you know what is the spathe now. स्पेथ जो है, जो हार्ट शेप का है, वो completely unfold हो जाए. At that time flower should be harvested. And another thing is paddocks जो है, उसकी जो टेल जैसा पोर्शन है, shows more than half color change. उसकी कलर चेंज होता है धीरे धीरे फ्रॉम बेस टू टॉप. तो हाफ जब कलर चेंज हो जाए, तब उसको हार्वेस्ट करना चाहिए. लाइक दिस इज द परफेक्ट हार्वेस्ट स्टेज. यहाँ पे ये जो स्पेथ है, तो वो कंप्लीटली अनफोल्ड हो चुका है, और जो स्पेडिक्स है, ये स्पेडिक्स जो हाफ कलर चेंज भी हो गया है. ये पहले पूरी ग्रीन थी, नाउ half of the spadix is white. So this is the perfect stage for harvesting. Packing, normally ये स्पेथ और स्पेडिक्स के बीच में कुछ कुशनिंग मटेरियल रखा जाता है, लाइक थर्मोकोल, ताकि ड्यूरिंग द पैकेजिंग ये स्पेथ या स्पेडिक्स टूट ना जाए. For that some materials should be like thermocol should be put between spathe and spadix. और ये जो फ्लावर है, वो पूरा या तो पेपर में या तो फिर पॉलीथीन बैग में कवर करके, फिर उसको हर एक सेपरेट फ्लावर में को इस तरह से कवर करके, फिर उसको पैक किया जाता है बंच में. Like this is the storage basically. So soft protective material should be placed between spathe and spadix, as I told you. That may be that thermocol. Insert into a polythene cover of appropriate size. ये जो पूरा फ्लावर है, उसको पॉलीथीन कवर में रखना है. स्टोरेज ऑलमोस्ट 12 to 14 डिग्री सेल्सियस का स्टोरेज होता है ये फ्लावर, और 15 से 20 मतलब 2 से 3 वीक्स तक उसको पानी में हम स्टोर कर सकते हैं. और उसका ये जो प्लांट है, उसका yield है 5 to 10 flowers per plant per year. That is the yield. अगर सेकंड ईयर है तो तब आपको 5 फ्लावर मिलेंगे, थर्ड ईयर में आपको 7 to 8 फ्लावर्स मिलेंगे, एंड फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स आपको 10 फ्लावर्स पर प्लांट मिलेंगे. So here how it kept in a water for a longer time for storage, like this. Then packaging, as I told you, हर एक फ्लावर को सेपरेट बैग में रैप किया जाता है, लाइक दिस. और स्पेथ और स्पेडिक्स के बीच में कुछ सॉफ्ट कुशनिंग मटेरियल रखा जाता है. एंड देन दिस होल द फ्लावर इज पैक्ड इन अ corrugated fiber box. इवन सॉफ्ट मटेरियल जो स्पेथ और स्पेडिक्स पे बीच में रखना है, उसमें पेपर के ट्रेस भी यूज होते हैं, लाइक दिस. और फिर उसको इस तरह से बॉक्स में पैक किया जाता है. The lower portion
उसको वायल में रखा जाता है ताकि वो ज्यादा दिन तक फ्रेश रह सके. दिस इज द प्लास्टिक वायल. वायल बोलते हैं उसको, जिसमें रखने से फ्लावर्स ज्यादा दिन तक फ्रेश रहते हैं. और वायल में सुक्रोज सॉल्यूशन होता है 0.2% सुक्रोज सॉल्यूशन, ताकि प्लांट को फ्लावर को फूड मिलता रहे एंड इट विल कीप फ्रेश. Like this is the packaging of this anthurium flower. एक पैकेज में almost 100 flowers होते हैं, maybe of different color or maybe of same color, like this. Now major pest and diseases. So normally ये जो crop है उसमें मैंने बहुत ज्यादा पेस्ट डिजीज देखे नहीं है कभी, लेकिन snail and slugs are the most notorious pest. वो बहुत ही frequent होते हैं इसमें because of. Dr. Hardik, yes, sorry to interrupt you, लेकिन it's now 9:30, so you have to wrap up the session in next coming 5 minutes. Yeah, definitely. Please. So snail और slug जो होते हैं वो बहुत ही notorious pest है इसमें. Hand picking is the best remedy, but snail और slug जो है वो रात को ही बाहर निकलते हैं, तो it is very difficult. So 10 ml neem oil per liter of water अगर हम स्प्रे करेंगे तो snail slug नहीं आएंगे. Then poison bait of metaldehyde with wheat is also used for attract them. And even bowl of beer is attractive. They attract snails and वो उसमें आके गिर जाते हैं और मर जाते हैं. So these are the remedies. Beetles, these are the some trizophos, endosulfan. If there is a thrips, imidacloprid, dimethoate at 2 ml per liter. Then mealybugs may come sometimes. So methylparathion or endosulfan. So these are the remedies of pest. Then some disease like bacterial blight, anthracnose, root rot, leaf spots are associated with anthurium. Out of this, bacterial blight is most affecting disease. वो बहुत ही anthurium को बहुत ज़्यादा affect करता है. And streptocycline along with carbendazim उसमें spray किया जाता है for bacterial blight. Now this is the very major disease of the anthurium. ज्यादा पेस्ट भी नहीं आते हैं, लेकिन डिसीज जब आता है, नॉर्मली इसमें डिसीज नहीं आते हैं, लेकिन जब आता है तब ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी एंड सम वार्म कंडीशन डिसीज स्प्रेड बहुत ज्यादा हो जाता है. एंड बैक्टीरियल ब्लाइट इज मोस्ट इन्फेक्शियस एज आई टोल्ड यू. सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. बैक्टीरियल ब्लाइट में पहले तो ऐसे येलोइंग होता है और छोटे छोटे स्पॉट्स दिखते हैं आपको. देन इट विल इंक्रीज. ये जो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं वो बड़े बड़े राउंड हो जाते हैं, इस तरह से डिस्कलर हो जाता है लीफ. एंड स्लोली इट विल द होल लीफ विल इन्फेक्टेड लाइक दिस. और लीफ खत्म होने लगती है, आपके प्लांट्स में से जितने भी लीफ रहते हैं वो खत्म होने लगती है लाइक दिस. दिस आर द प्लांट इन्फेक्टेड विथ बैक्टीरियल ब्लाइट like this. In this picture you can see the intensity of bacterial blight. बहुत सारे मतलब more than 70% plants didn't have any leaf just due to bacterial blight. So it's a very dangerous disease and it should be preventive spray उसके लेते रहने चाहिए. Streptocycline should be sprayed frequently in field. Now the good news is there is a one variety of Anthurium ornatum जो कि IIHR मतलब बेंगलोर IIHR के द्वारा बाहर निकाली गई है. The name of that variety is IIHR A1. It is highly vigorous variety. It is resistant to this bacterial blight. It is temperature insensitive, so it also flowers in high temperature or it even grows at a low temperature. So it is temperature insensitive variety. It is having high suckering habit. High suckering means high number of flowers, and it also produces some fragrance. So this is a new development in Anthurium, but still it's not that popular variety. So this is all about Anthurium ornatum. Thank you. Over to you, Sachin sir. Thank you very much, Dr. Hardik Shah sir, for very valuable information on the crop of Anthurium. You added good things, necessary pest and disease, even for
your propagation techniques you have shared very nicely. So thank you very much once again. I request all the participants, those who have any question to our speakers, they are free to ask their question. Now this forum is open for the question and answer session. Those who have any question, they are free to ask their questions. I think there are no questions from our participants. It was a nice webinar. You have given very informative. It's an informative session. Dr. Mukesh Patel has rightly focused on the each and every aspect of the Gladiolus, and Dr. Hardik Shah has focused on the crop of Anthurium. So on behalf of Indian Nurserymen Association, I am very thankful to both the speakers for sparing their valuable time for Indian Nurserymen Association. And last but not least is our participants. So thank you very much to all the participants who have joined from all over India, and team of INA, Prachi madam, Pinky madam, for sparing their taking a lot of efforts for these webinars. So on behalf of an Indian Nurserymen Association, and once again I'm thankful to all of you for joining this webinar. So we have the next webinar on Thursday by 8 a.m. on the topic of schemes of national horticulture boards for nursery and agriculture setups. So see you in the next webinar. Till then, have a nice time to all of you. Thank you very much for joining us for this webinar. Thank you.